Principal Secretary of the department? Principal Secretary, Mr. Neeraj Mandloi. Neeraj Mandloi. Now he has to answer. So we'll call him. आपने 625.18 करोड़ का जो भेजा है, आपको इसका इल्म नहीं था कि ये मैं क्या भेज रहा हूँ, वहाँ से क्या अप्रूव होके आएगा? उनका कहना ये है कि इसमें से 599 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो तो आपका सीवेज लाइन का है और ड्रेन वाटर का है, और उसका नमामि गंगे से कोई लेना देना नहीं है। मात्र 27 करोड़ रुपए का आपने उसमें जो प्रपोजल भेजा है वो भेजा है स्वर्णरेखा रिवर का। ऐसा क्यों किया आपने? Later on, it is sent to state government also. अरे what state government will do with this? I fail to understand. अरे you people are IAS officers. You are not supposed to know what kind of proposals to be sent on Namami Gange. This is the confusion you are creating. Why did you do that? If you want to send your sewage proposal and drain water proposal to government, why did you add on to the Namami Gange project? Where is the revised proposal for Namami Gange? Where is the revised proposal for Namami Gange? स्वर्ण रेखा रिवाइवल का पैसा कितना चाहिए आपको? आपने लिख के दीजिए, दोबारा भेजा इसके बाद 13-12 के बाद क्या हुआ? मिस्टर काउंसिल, डोंट टेल मी स्टोरीज. This communication from Ministry of Rashtriya Swachh Ganga Mission suggests that you are utterly confused. The total exercise was futile. First, Government of India will only give you this Namami Gange project mission will give you money only for revival of Swarnrekha river. It will not spare funds for sewage line or drain water. Who represent? Who officer has come? Who is the officer? Did you have any meeting with the commissioner? Last time you had come here, na? So you had asked for some proposal. Whether did they ask for any meeting with you? इनका proposal कब का है ये? अक्टूबर. तो अक्टूबर के पहले तो हम लोगों ने कॉग्निजेंस ले लिया है ना केस का, तब तो मैटर पेंडिंग था यहाँ पे, तो क्यों जोड़ा आपने इसमें? आपने कुछ समझाया नहीं था कि सीवेज लाइन का और ड्रेन वाटर का इसमें मामला नहीं जुड़ सकता है, तो एसटीपी प्लांट का तो इसमें है ही नहीं, बात उसी का ही है. 599 करोड़ आपने दे दिया सीवेज लाइन का. क्यों कर रहे हैं भाई इस प्रकार से? आप क्या चाहते हैं, आप बताइए. What do you want? We will coordinate with Namami Gange and as per. नहीं कोऑर्डिनेट नहीं. अभी तक आप क्या करते रहे? अभी बुद्धि में ताला लगा हुआ था क्या? क्यों किया आप लोगों ने इस तरीके से? अगर आप चाहते हैं मुकदमा इस कोर्ट से चला जाए तो हम जबलपुर भेज देते हैं. कोई नहीं चाहता. नहीं, इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते आप. अगर आपको लगता है बेंच इनकन्वीनियंट है तो हम मेन सीट भेज देते हैं इसको, फिर वहाँ आप बहस करते रहिएगा. भाई वाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम? आई एम रियली इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. मतलब आप लोग की सीरियसनेस सही केवल यही है, पास ऑन द बक. अपनी प्रॉब्लम किसी और के पाले में डाल दो, उलझे मामला उलझता रहे. मिस्टर हर्ष सिंह, आपको देखना चाहिए था ना ये आप किसकी एडवाइस में आपने भेजा ये? जब कोर्ट में केस था उसके बाद मीटिंग हुई लगातार, और मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इसके लिए फंड की आवश्यकता है सर. तो 2 जगह भेजा, एक नमामि गंगे में भेजा. उनका प्रपोजल ये आया कि हम एसटीपी प्लांट के लिए दे देंगे, बाकी हम सीवर के लिए नहीं दे पाएंगे. आपने कभी प्रपोजल भेजने के पहले पूछा उनसे? सर हम लोग कोऑर्डिनेशन में. क्या कोऑर्डिनेशन में थे आप? अगर आप कोऑर्डिनेशन में होते तो वो आपको बताते कि भाई आप इसमें सीवेज वाला मसला नहीं डाल सकते. सर उन्होंने ये बताया था कि आप भेज के फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे, विचार करके फाइनली रिजेक्ट कर दिया हमारा प्रपोजल. यही प्रॉब्लम है. हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है. जहां कुछ मसला हुआ कमेटी बना दो. कभी किसी को निर्णय लेने की क्या कहूँ मैं इस चीज़ को, आई मीन दे डू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ टेकिंग अ डिसीजन. हर आदमी अपनी कलम बचाता है. सब गोलमोल. भाई कुछ तो अपने अंदर देश में सम कॉन्शियस इन यू टू टेक अ डिसीजन. यू मे बी रॉन्ग while taking a decision, but one has to take a decision. And if you don't take a decision, things will move on from one table to another table. It requires application of mind.
Why one should not apply its mind? What for we all are paid? If we as judges do not decide the cases and just pass an order, decide the representation, do this, do that, are we justifying our salary? No. We have to take a decision, this way or that way. Similarly, you are expected to decide, maybe in a different manner. But once we have taken a cause, public cause, then in all fairness, you should apply your proper mind. How to go about it? Why we are sitting here? Only to facilitate. अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, फंड्स नहीं दे रही है, तो वी आर हियर टू इंश्योर दैट यू गेट फंड्स. आपका काम तो काम करना है. जो जहाँ ऑब्स्टिकल्स हैं, जहाँ हिकअप्स हैं, जहाँ बॉटलनेक्स हैं, वो हम क्लियर करेंगे. बट ऐसे आप करोगे तो कैसे काम होगा? अभी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है, सुनिए मेरी बात आप, वो रिपोर्ट बनी है जिसमें नमामि गंगे के ऊपर कितना खर्चा आएगा, वो कहाँ है? वो रिपोर्ट कहाँ है जिसमें ये होगी हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर रिवाइवल ऑफ स्वर्णरेखा रिवर ओनली? वेयर इज दैट डॉक्यूमेंट? For that sewer connection, we have already sent to the state. फिर वही वाली बात. For revival of Namami Gange, we are again coordinate with. No, you please. This means you have not prepared the report so far. You do not have any idea. You have not worked as to how much money is required for revival of Swarnrekha River so far. Only you have made a provision of STP for purifying of the water. जिस काम के लिए हम यहाँ बैठे हैं, उसका उस पर कोई एक्सरसाइज हुई ही नहीं. And you want to attend that conference at 1 o'clock. If you don't have any proposal, what kind of conference will you be attending? Who is conducting the conference? The Chief Secretary. For what? Chief Secretary, Government of India, Madhya Pradesh. Urban Administration for allocation of. Your Chief Secretary will give you money for this Swarnrekha River? Solid waste. No, I want you to tell me whether your Chief Secretary will give you money for Swarnrekha River. No, it's state has to issue. Huh? State has to issue the funds. They are only coordinating on. I am asking this question: yes, whether the state government will release the funds for revival Swarnrekha River or not? Well, they will do it for the sewerage, for the Namam. मतलब मिस्टर खोत, आप भी उतने ही उसी फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी में आपका डिपार्टमेंट चल रहा है. आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं हमारा. स्वर्णरेखा रिवर के रिवाइवल के लिए राज्य शासन आपको पैसा देगा क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए. That will be provided by Namami. तो बार बार मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ. आपने कहा साहब नमामि गंगे का हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाला है, उसमें हमें प्रेजेंटेशन देना है. आपका प्रपोजल तो वहाँ गया नहीं है अभी तक. प्रपोजल 27 करोड़ का आपने STP का दिया हुआ है. तो किस बात का आप प्रेजेंटेशन करेंगे और किस बात का वहाँ पे प्रपोजल एक्सेप्ट होगा आपका? सब हवा में बात चल रही है. That is for solid waste management also. We will exclude that proposal from the Namami Gange project and हद होती है तो एलिमेंट्री चीजें हैं. separate revise 10 ऑफिसर खड़े यहाँ पे, सब खड़े विद लॉन्ग फेसेस. separate proposal for revival we will send, well, in coordination with the Namami Gange office. And this sewerage project has already been sent to the state government and the. This is how they are working. Second क्या है? Second is solid waste. नहीं, थोड़ी देर बाद में आएगा. पहले सीवेज लाइन का बताइए हमको आप. हाँ, सीवेज लाइन का मतलब the proposal as per the direction of the honorable. दिखाइए सीवेज लाइन क्या प्रपोजल है आपका. Yes, ma'am. We have filed it yesterday, madam. The compliance report. Forget about compliance report. You show me what is the sewage report. How much money is required for sewage separate line and for flow of drain water. Sir, actually, the practical problem is that blocking will not serve the purpose until there is a fresh line connecting to the Jalalpur for the sewage treatment plant. Because the flow and the amount of sewage which is coming, it is not possible from the old line to again send it to this destination place. Because they are not reviving. Those lines are choked. Those lines are of 40 years back. Later, and they are at places they are broken. So how long will you take? But the project is of 2 years. Because it's a 13 kilometers, both sides 26 kilometers. So for 2 years there shall be no work done for revival of the Swarnrekha River. For 2 years you will be working with Chief Secretary regarding funds, then there would be some comments, some clarifications, and on papers things will move for another 5 years. So you want to scuttle the attempt of this court to ensure that there is a progress in the work.
For last 6 months we are dealing with the matter, and up till now you have not been able to get the funds. And to top it all, you created confusion at Namami Gange level also. So you do not want to work. I mean, our efforts to ensure that the track is cleared, there is a proper plantation on both sides, all will go futile. All right, then we will call your secretary. Then he will answer, because we will not allow, we will not leave it in lurch. We will reach to a logical end. If you are not able to work, then you disqualify yourself to be here. Forget about it then. Yes, Mr. Modi, who should be called here? If commissioner is not being helped by the secretaries at the Bhopal, at the state level, then we will call somebody who is able to, who is accountable for the civic amenities in Gwalior district, Gwalior city. Someone who can. You have sufficient funds. Let me now be very clear on this. To dole out. Don't force me to speak more. But you do not have funds for revival of the drainage system, for providing that solid waste management machine. 32 करोड़ की वो मशीन आनी है. उसके बारे में क्या लिखा आपने? उसके बारे में क्या आया उसके बारे में? उसके बारे में प्रपोजल भेज दिया फॉर एडिशनल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एट केदारपुर. We have filed yesterday. क्या हुआ उसमें? क्या हुआ उसमें अभी तक? वो अभी it is pending with the government. तो कब तक पेंडिंग रहेगा वो? कब भेजा है आपने? 22/11 के बाद आपने उसकी कंप्लायंस 5/1 को करी है. According to the officer Malad, because that survey was required to be done by the consultant, and then the proposal has been sent. Mr. Khod, I am not happy at all. Mr. Harsh Singh, please take it on a serious note. Otherwise, we all will be in trouble. Because court proceedings have to be taken on a serious note. If you think that you can do away with, then you are sadly mistaken. You please do it. And Mr. Modi, if this proposal has gone there for release of 30, how much money you want? 100 crore they have already received. From where? From government, but there's a statement recorded. Mr. Modi, I think today also we are cutting a very sorry figure for the state today. You know that for last 3 hearings, we have been taking the matter on a detailed note, and you have no instructions. Have you ever bothered to read the order sheets? What give you a copy? Are you here only to take copy and forward it? Are you post office or what? I'll be able to follow it up. What followed up? Have you not seen the order sheet? See the order sheet of 22nd of November. No, before that, 5th September is also relevant. Khilkar has appeared. Read the order sheet. What we have written in the order sheet. तो उसने कब काम किया? उसने 15 दिन लिए थे सर पूरा करने. रिपोर्ट हमने वेरीफाई की थी. उसके बाद हमने 2 प्लांट सर मैं बताना चाहूँ एडिशनली हमारे 2 पॉइंट और थे वो भी हमने चालू कर दिए सर. तो जो हमारा रोज का किराया है वो भी अब टेकन केयर हो रहा है. मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जो उस दिन बताया वो लिखा गया है नहीं लिखा गया? आपको प्लांट चाहिए कि नहीं चाहिए? नया प्रपोजल मिल गया सर हमने पूरा. नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डर गलत लिखा हुआ है और आपके पास आप सक्षम है करने के लिए, तो मैं इसको ऑर्डर निकाल कर लेता हूँ. उसी डायरेक्शन में सर ये पूरा वेरीफाई करके सर पूरा वेरीफाई. मैं बार बार आप लोग इस मुतालके में मत रहो. मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कॉशन कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक अस फॉर अ राइड. प्लीज़. जब 22/11 में आपने खुद बताया इन चीज़ों को, हमने उसको ऑर्डर शीट में लिखा, तो आपने 22/11 के बाद उसमें 1.5 महीना लगा दिया प्रपोजल भेजने में. हम यहाँ चाह रहे हैं इमीडिएटली काम शुरू हो, वहाँ 1.5 महीने में प्रपोजल जा रहा है. अब आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो कि साहब हमारे पास और भी प्लांट है, मैं उसको रिवाइव कर रहा हूँ, उससे साफ हो जाएंगे. क्यों? किसको डिफेंड कर रहे हो आप? गवर्नमेंट को. 100 करोड़ कहाँ में मिले इनको? Sir, 5th September for sewage. 100 करोड़. 100 crore. This is in order sheet dated 5th September. सर वो मिले नहीं Where है. is state? वो अंडर अमृत 2 इट इज इसीलिए रिजर्व फॉर ग्वालियर अमृत 2 मिले नहीं. क्या करें उसके लिए बताइए. हम किसको बुलाएं यहाँ पर? हम मिस्टर मोदी, आप इसको मैं परसों लगाऊंगा केस फिर से. आई विल हियर टुमारो अगेन. You ensure that whatever funds you have allocated to the state, to the Gwalior city is released. And if they are not working, then no wonder I may call your secretary or chief secretary also. Well, if the High Court orders, the sanctity of the High Court order is undermined,
then we would be the last person to budge. So neither Namami Gange has taken off, nor sewage water system has taken off. Everything is moving on a paper. क्या किया मिस्टर खोद आपने सीवेज के लिए क्या किया आपने? As per the direction of the Honorable Court, we have submitted our project to the state government. हाँ. And now state. कब भेजा है आपने? It is on 14/12. है? 14/12. हाँ, कितना पैसा मांगा है? 567 crore. हाँ. जो एक्चुअली वो जो नमामि गंगे को भेजा था उसमें वो सीवर इंक्लूसिव था, इंक्लूडिंग द एसटीपी. सो नाउ द सेपरेट सीवर प्रोजेक्ट हैज बीन सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर 567 crore. मिस्टर मोदी का नोट करिए आप. We have informed them in writing with all the caveats regarding possibility of coercive actions also. But give me 2 days, I'll No, if they are not even listening to you, then we know how to make them understand the language of the court. If they are so unscrupulous that they are not refuse to understand what you are writing them as a legal advisor, then we will call them here in person. Who is that secretary? We will call him here. I'll give you one chance. Come back with a positive statement that says this money will be released on so and so date. You may do it in parts. Because 599 crores is not required at a go. It requires to be released in a phased manner. But they have to work on it also. अमृत कोई मतलब अमृत का प्रोजेक्ट है क्या है? अमृत है ना? अमृत. अगर अमृत प्रोजेक्ट है तो उसको कम से कम कुछ तो इज्जत करो अमृत की. कि सब अमृत के अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ चलेगा. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी काम के लिए सिंसियर है तो आप भी तो उतनी शराफत से काम करें. It's a short form of Atal Mission for Rejuvenation of. जो भी हो नाम, पर्पस तो पायस है ना. Yes, पायस. उस पर्पस को फ्रस्ट्रेट क्यों कर रहे हो? Yes. लोकल लेवल पे काम तुम ना करो, बदनाम सेंट्रल गवर्नमेंट हो. यानी आप देखिए नमामि गंगे में 100 करोड़ रुपए मिल रहा है, 200 करोड़ रुपए मिल रहा है, उसको लेना भी नहीं आता आपको. और अमृत की बात कर रहे हो. You have to do it within 3 days. I am calling it out next Tuesday. I will not pass any order today. I want government's reaction regarding this proposal, your efforts regarding finalization of the project. Then I will move further. I am not at all happy today with the kind of response I am getting from all of you. Yes, who is from PWD? WRD. हाँ. क्या किया आपने वहाँ पर? तो ये सारे पूरे रास्ते में कहीं सीवेज पानी आ रहा है उसमें? ये मिस्टर मोदी खुद हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? बट सीवर आता है फ्रॉम द सिटी. दिस इज ऑल आउट ऑफ द सिटी. हाँ. अभी वहाँ से कितना दूर बचा है सिटी हमारे में? वो हनुमान बांध से सिटी स्टार्ट होता है. हनुमान बांध तक आ गए आप? अब उसका आगे किसे बनाएगा वो? जब तक पानी जब तो सूखेगा नहीं वहाँ पर. हनुमान बांध से आगे कितना दूर है? और हनुमान बांध से ये स्वर्ण रेखा स्टार्ट होती है टिल जलालपुर. कितना डिस्टेंस है? 13 किलोमीटर. हाँ, तो आप हनुमान बांध के बाद वो क्या काम करेगा? किसको दिया है आपने? बताइए मिस्टर मोदी को आप बताइए कहाँ क्या चिट्ठी कहाँ है आपकी? वेयर इज द करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू रिलीज ऑफ फंड्स? नहीं, वो दिन आने वाले हैं कि सरकार के पास पैसा है नहीं, खजाना खाली ऐसा दिख रहा है मेरे को. तो अब भीख मांगो, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करो और पब्लिक का काम करो. अगर यही स्थिति बनने वाली है तो ठीक है, फिर चैरिटी का ऑफिस खोल लो एक यहीं कहीं पे और लोगों से कहो भाई पैसा हमारे पास है नहीं, पैसा दो तो प्लांट लगाएं. यही कहना चाहते हो आप? कितना फंड मांगा है आपने मिस्टर मोदी? टेक नोट ऑफ दिस ऑल्सो. प्रपोजल टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. है सर, क्योंकि वो रिवर रेजुविनेशन है, फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन. तो किसको हु विल रिलीज द फंड्स? Now, Mr. From the Namami Gange, you are there, na? Have you got the proposal? Show me the document. Again, I am not passing any order today. 17th, if you lordship. 17th, no problem, but ensure that. Realize you are additional advocate general. And you don't wash away your hands saying that, sir, abhi chithi likh di. If they do not hear you, you tell us frankly. So they don't bother to take our advice. Despite our sincere persuasion, then we know how to make them understand our language of the court.
But I want you to now act as an additional advocate in real sense, ensuring that they come out with substantial reply. No ipsy-dixy, no illusions. I'm not passing any order today. Come on 17th. Yes, our officer will deliberate with the officers of the. Whatever you want to do, I am not at all happy today. You come back on 17th.